हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम जो है एडवांस पीएचपी इस सब्जेक्ट की जो है एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एमसीक्यू की सीरीज में हम जो एमसीक्यू देखने वाले हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू टॉपिक देखने वाले हैं। तो इस सीरीज के लेक्चर 1 में हम जो है टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन टू ऊप्स इन पीएचपी, तो इस टॉपिक के जो है 25 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यू जो है हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डैश स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी ओओपी एंड ऑप्शन डी क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओओपी। ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका शॉर्टकट है ऊप्स यानी ओओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द डैश डैश कीवर्ड। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीज, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लास। अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज अबाउट क्रिएटिंग objects that contain both data and function। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी फंक्शन प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लास। क्लास इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन क्रिएट मल्टीपल डैश डैश फॉर्म अ क्लास। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच डैश डैश हैज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स डिफाइंड इन द क्लास बट दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वैल्यू। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी इंस्टेंस ऑफ एंड ऑप्शन डी क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट। Each object has all the properties and method defined in the class, but they have different property values. Next question है object of class is created using dash dash keyword। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी these, ऑप्शन सी न्यू एंड ऑप्शन डी इंस्टेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यू। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट आर आल्सो नोन एज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी दीज, ऑप्शन सी टेम्पलेट एंड ऑप्शन डी इंस्टेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नोन एज इंस्टेंस। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डैश कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड is only available inside methods। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी these, ऑप्शन सी इंस्टेंस ऑफ एंड ऑप्शन डी न्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी these। These keyword refers to the current object and is only available inside a method। नेक्स्ट क्वेश्चन है use the dash dash keyword to check if the object belongs to the specific class। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी these, ऑप्शन सी इंस्टेंस ऑफ एंड ऑप्शन डी न्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंस्टेंस ऑफ। यूज द इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड टू चेक इफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश डैश अलाउज यू टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी अपॉन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी इंस्टेंस ऑफ एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अलाउज यू टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज अपॉन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द कंस्ट्रक्ट फंक्शन स्टार्ट्स विथ डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर, ऑप्शन सी सिंगल अंडरस्कोर एंड ऑप्शन डी फंक्शंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर। कंस्ट्रक्ट फंक्शन स्टार्ट्स विथ डबल अंडरस्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if you create a dash dash function, PHP will automatically call this function when you create an object from a class. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट फंक्शन PHP automatically call when you create an object from a class. Next question है a dash dash is called when the script is stopped or exited. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट इज कॉल्ड व्हेन द स्क्रिप्ट इज स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन और एग्जिटेड। जो इस टाइप के एमसीक्यू हैं तो वो जो है आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। यहाँ पर जो है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कॉलिंग एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ स्क्रिप्ट स्टॉपिंग और एग्जिटेड जो है डिस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश फंक्शन विल ऑटोमेटिकली कॉल दिस फंक्शन एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। दिस फंक्शन विल ऑटोमेटिकली कॉल एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है तब जो है डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड्स को प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन बाय अ सबक्लास। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी फाइनल एंड ऑप्शन डी स्टैटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइनल। फाइनल मेथड्स को प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन बाय अ सबक्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्जन ऑफ PHP इंट्रोड्यूस द इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए PHP 4, ऑप्शन बी PHP 5, ऑप्शन सी PHP 5.3 एंड ऑप्शन डी PHP 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PHP 5. This version introduced the instance of keyword. Next question है which one of the following keyword is used to inherit our subclass into superclass? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए extend, ऑप्शन बी implement, ऑप्शन सी inherit एंड ऑप्शन डी include। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए extend. Extend keyword is used to inherit your subclass into superclass. Next question है the practice of separating the user from the true inner working of the application through well-known interface is known as dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए polymorphism, ऑप्शन बी inheritance, ऑप्शन सी encapsulation एंड ऑप्शन डी abstraction। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी encapsulation. Hiding the inner working of the application through well-known interface is known as the encapsulation. Next question है which one of the following is the right way to invoke the method? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉलर साइन ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर मेथड नेम, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर मेथड नेम, ऑब्जेक्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेथड नेम एंड ऑप्शन डी डॉलर साइन ऑब्जेक्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेथड नेम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉलर साइन ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर मेथड नेम। This is the correct syntax to invoke a method. Next question है if one intends to create a model that will be assumed by the number of closely related objects, which class must be used? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्मल क्लास, ऑप्शन बी स्टैटिक क्लास, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड ऑप्शन डी इंटरफेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following advanced oops feature is not supported by PHP? तो यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं। फर्स्ट फीचर है मेथड ओवरलोडिंग, सेकंड फीचर है मल्टीपल इनहेरिटेंस,
थर्ड फीचर है नेम स्पेस एंड फोर्थ फीचर है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी मेथड ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस फीचर नॉट सपोर्टेड बाय PHP। नेक्स्ट क्वेश्चन है the concept of creating objects based on the predefined classes is known as dash dash। इसके ऑप्शन है क्लास क्रिएशन, ऑप्शन बी क्लास इंस्टेंशिएशन, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। The concept of creating object based on the predefined classes is known as object instantiation। Next question है how to define a new class called my class। तो इसके ऑप्शन ए class my class parenthesis, ऑप्शन बी class my class square bracket, ऑप्शन सी class my class curly bracket एंड ऑप्शन डी माई क्लास क्लास करली ब्रैकेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लास माई क्लास करली ब्रैकेट। हम जो भी क्लास डिक्लेयर करते हैं उससे पहले जो है क्लास कीवर्ड आता है, उसके बाद जो है क्लास का नेम आता है, और जो क्लास है स्टार्ट होता है ओपनिंग करली ब्रैकेट से और एंड होता है क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट सिंटैक्स है फॉर डिफाइनिंग द क्लास। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है which of the following built-in function is used to determine object type। तो इसके ऑप्शन ए is a, ऑप्शन बी टाइप, ऑप्शन सी obj टाइप, ऑप्शन डी is obj। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए is a। is a built-in function is used to determine object type। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.